Much of the current debate in our society is focused on whether or not the IMF program can be put back on the rails. And if it can, then when? The hope is that when the IMF returns, it will unlock loans and help from friendly countries as well as loan programs from other multilaterals. But the message, even from friendly countries, seems to be that Pakistan needs to put its house in order before it can expect money and help. If it does not, what is the point of sinking more money into a bottomless pit? The IMF program is seen as a sign that Pakistan is at least taking the initial steps to get its act together. Can Pakistan put its house in order? This seems to be the big question. The reluctance of this government to carry out reforms is not out of line with the disinclination that previous governments showed. Reform will be hard and costly. In the short run, it will impose significant costs on various groups within the country. Governments have been resisting imposing these costs for fear of losing their popularity and vote. Since every government has been kicking the can down the road, the malaise has become a lot deeper, so the reforms too would have to be a lot deeper. Can any government muster the political strength to enact reforms? Will the opposition sit with that government to ensure that there is wider support for the reforms? Both scenarios seem unlikely. The most likely course of action seems to be that the government in power will do the minimum needed to get the IMF program back, thus enabling it to borrow from friendly countries. And so the full crisis will be averted for some time, until it becomes the problem of the next government. The fact that the pit will get deeper and the challenges more difficult is unlikely to concern the government of the time. It will be someone else's problem soon enough. So we will continue living in crisis mode. There is another issue here as well. Some quarters have started a dialogue on reimagining Pakistan. There have been some events and debates around the issue. But what has become crystal clear from these fledgling dialogues and debates is that there is not much thought that has gone into A. What are the deeper reforms that need to happen in Pakistan to tackle our basic issues? B. How are these reforms to be implemented? And C. How are the coalitions which are supposed to implement change to be constructed and sustained? Can Pakistan put its house in order? This seems to be the big question. What are the deeper reforms that are needed? Basic reforms need to be implemented in most sectors of the economy. Legal reforms, property rights reforms, market reforms have to come in. There have to be major changes in the taxation setup, especially the property tax system and other local taxes. Expenditure priorities need to change a lot too. There will need to be major changes in policies for education, health, and social welfare. Higher education policies need to be revamped. There will not be a single sector that will not have to be reformed. But this requires detailed work before reforms can be implemented. And it is clear, from the dialogues as well as the general conversation in society, that we have not done the work at the sector level and on the details required to be able to know what will need to be done in case a government, however unlikely, wants to carry out the deeper reforms. I was looking at some of the ideas that were being put forward for reforms in the education sector. Our education system is quite poor. Too many children are out of schools and too many who are in government and low-fee private schools are getting poor quality education. Yet, the only thoughts that were put forward were for privatization of the system, offering vouchers, and so on. There was no deeper engagement with issues or any thoughts about the viability of the reforms being proposed and the reason why it was thought they might be effective in our context. Even if the reform work were in place, do we possess the bureaucratic competence to implement reforms? This remains a big question. There are major concerns about the quality of the bureaucracy and systems in Pakistan, and this will not make implementing reforms an easy exercise. Take the history of reforms in any area in Pakistan, and the matter becomes clearer. The Federal Board of Revenue and our taxation system have been major areas of reform efforts for the last 4 decades or so. Is the FBR today any more competent or effective than other departments of the state that have not had similar reform priorities? Is it more transparent and less corrupt? It would be hard to argue that it is.
The Indian economy was also in a lot of trouble in late 1980s and early 1990s. Some of the issues India faced were similar to where we are at the moment. They enacted reforms. But the preparations they did for the exercise were quite impressive. They had done a lot of sectoral work before opening up the economy, and when it happened, the economy was able to respond quite quickly. There might be useful lessons for us there. The next few years for Pakistan won't be easy. Most likely we will not carry out the needed reforms and continue to limp along on handouts. But, in case we do want to implement reforms, the problem we are going to face is that we do not have the needed background work in place and we do not have the competence levels needed for implementing the reforms. So, even if we choose to go down the needed path, we might not be able to. Testing times will continue for the people of Pakistan. The writer is a senior research fellow at the Institute of Development and Economic Alternatives, and an associate professor of economics at LUMS. Published in Dawn, February 3, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. 3 फरवरी 2023। हमारे मुआशरे में मौजूदा बहस का ज़्यादातर हिस्सा इस बात पर मरकूज है कि आया IMF प्रोग्राम को दोबारा पटरी पर लाया जा सकता है या नहीं, और अगर ये हो सकता है तो कब। उम्मीद है कि जब IMF वापस आएगा तो वो दोस्त ममालिक से कर्जों और मदद के साथ साथ दीगर कसीरल जहती ममालिक से कर्जों के प्रोग्रामों को भी खोल देगा। लेकिन दोस्त ममालिक की तरफ से भी ये पैगाम मिलता नजर आता है कि पाकिस्तान को पैसे और मदद की तवक्को करने से पहले अपने घर को ठीक करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं होता है तो मज़ीद पैसे को एक बेपनाह गले में दबोने का क्या मतलब है। IMF प्रोग्राम को इस बात की अलामत के तौर पर देखा जा रहा है कि पाकिस्तान कम अज़ कम अपने काम को यकजा करने के लिए इब्तिदाई इक़दामात कर रहा है। क्या पाकिस्तान अपने घर को ठीक कर सकता है? ये एक बड़ा सवाल लगता है। इस्लाहात के लिए इस हुकूमत की हिचकिचाहट पिछली हुकूमतों की बेहिस्सी से मुताबिकत नहीं रखती। इस्लाह मुश्किल और महंगी होगी। मुख्तसर मुद्दत में ये मुल्क के अंदर मुख्तलिफ ग्रोहों पर अहम अखराजात आयद करेगा। हुकूमतें अपनी मकबूलियत और वोट खोने के खौफ से इन अखराजात को आयद करने की मुखालफत कर रही हैं। चूँकि हर हुकूमत कीन को सड़क पर लाते मार रही है, इसलिए ये परेशानी बहुत गहरी हो गई है। लिहाजा इस्लाहात को भी बहुत गहरा करना होगा। क्या कोई हुकूमत इस्लाहात लाने के लिए सियासी ताकत जमा कर सकती है? क्या अपोजिशन इस हुकूमत के साथ बैठकर इस बात को यकीनी बनाएगी कि इस्लाहात के लिए वसीतर हिमायत हो? दोनों सूरतें नामुमकिन दिखाई देती हैं। सबसे ज्यादा मुमकिना इक़दाम ये नजर आता है कि बरसर इक़्तिदार हुकूमत IMF प्रोग्राम को वापस लेने के लिए कम से कम ज़रूरी इक़दामात करेगी। इस तरह इसे दोस्त ममालिक से कर्ज लेने के काबिल बनाएगी, और इस तरह पूरे बहरान को कुछ वक्त के लिए टाल दिया जाएगा जब तक कि ये अगली हुकूमत का मसला ना बन जाए। हकीकत यह है कि गड़ा गहरा हो जाएगा और चैलेंजेस मजीद मुश्किल हो जाएंगे। इस वक्त की हुकूमत को परेशान करने का इम्कान नहीं है। ये जल्द ही किसी और का मसला बन जाएगा। लिहाजा हम बहरान के मोड में रहना जारी रखेंगे। यहाँ एक और मसला भी है। कुछ हलकों ने पाकिस्तान के बारे में असरनो तसव्वुर करने पर बातचीत शुरू कर दी है। इस मसले के अर्द गिर्द कुछ वाक़यात और मुबाहिसे हुए हैं, लेकिन इन नए मुकालमों और मुबाहसों से जो बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है वो ये है कि इस पर ज़्यादा गौर और खौज नहीं किया गया है। अलिफ, हमारे बुनियादी मसाइल को हल करने के लिए पाकिस्तान में कौन सी गहरी इस्लाहात की ज़रूरत है। बेद, इन इस्लाहात को किस तरह नाफिज किया जाएगा। और जीम, तब्दीली को नाफिज करने वाले इत्तेहाद ओहे की तामीर और बरकरारी कैसे की जाएगी। क्या पाकिस्तान अपने घर को ठीक कर सकता है? ये एक बड़ा सवाल लगता है। वो कौन सी गहरी इस्लाहात हैं जिनकी ज़रूरत है? मईशत के बेशतर शुबों में बुनियादी इस्लाहात नाफिज करने की ज़रूरत है। कानूनी इस्लाहात, प्रॉपर्टी राइट्स रिफॉर्म्स, मार्केट रिफॉर्म्स को लाना होगा। टैक्स के सीट अप,
खास तौर पर प्रॉपर्टी टैक्स के निज़ाम और दीगर मकामी टैक्सों में बड़ी तब्दीलियों की ज़रूरत है। अखराजात की तरजीहात को भी बहुत कुछ तब्दील करने की ज़रूरत है। तालीम, सेहत और समाजी बहबूद के लिए पॉलिसियों में बड़ी तब्दीलियों की ज़रूरत होगी। आला तालीम की पॉलिसियों को असरनो तरतीब देने की ज़रूरत है। एक भी शोबा ऐसा नहीं होगा जिसमें इस्लाह न करना पड़े, लेकिन इस्लाहात को नाफिज करने से पहले इसके लिए तफसीली काम की ज़रूरत है। मुकालमों के साथ साथ मुआशरे में होने वाली अमूमी गुफ्तगू से ये बात वाज़ेह है कि हमने शोबे की सतह पर वो काम नहीं किया है जो ये जानने के काबिल होने के लिए ज़रूरी है कि अगर कोई हुकूमत गहरी इस्लाहात करना चाहती है तो क्या करने की ज़रूरत होगी। मैं कुछ ख्यालात को देख रहा था जो तालीम के शोबे में इस्लाहात के लिए पेश किए जा रहे थे। हमारा तालीमी निज़ाम बहुत ख़राब है। बहुत से बच्चे स्कूलों से बाहर हैं और बहुत से ऐसे हैं जो सरकारी और कम फीस वाले निजी स्कूलों में हैं, वो नाकिस मेयार की तालीम हासिल कर रहे हैं। इसके बावजूद सिर्फ इस निज़ाम की निजकारी, वाउचर की पेशकश वगैरह के बारे में ख्यालात पेश किए गए थे। मुजव्वज़ा इस्लाहात की इफ़ादियत के बारे में कोई गहरी वाबस्तगी नहीं थी और इस वजह से कि ये हमारे तनाजुर में मुअस्सर साबित हो सकते हैं। यहाँ तक कि अगर इस्लाहात का काम जारी था तो क्या हमारे पास इस्लाहात को नाफिज करने के लिए ब्यूरोक्रेटिक सलाहियत है? ये एक बड़ा सवाल है। पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी और निज़ाम के मेयार के बारे में बड़े खदशात हैं और इससे इस्लाहात पर अमल दरामद आसान अमल नहीं होगा। पाकिस्तान के किसी भी शोबे में इस्लाहात की तारीख ले लीजिए तो मामला वाज़ेह हो जाता है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और हमारा टैक्स निज़ाम गुज़िश्ता 4 दहाइयों से इस्लाहात की कोशिशों के अहम शोबे रहे हैं। क्या आज FBR रियासत के दीगर महकमों के मुकाबले में ज़्यादा काबिल मुअस्सर है जिनकी इस्लाहाती तरजीहात यकसा नहीं है? क्या ये ज़्यादा शफ़ाफ़ और कम बदउनवान है? ये दलील देना मुश्किल होगा कि ये है। 1980 की दहाई के आखिर और 1990 की दहाई के अवाइल में हिंदुस्तानी मईशत भी बहुत मुश्किल में थी। हिंदुस्तान को जिन मसाइल का सामना करना पड़ा इनमें से कुछ ऐसे ही थे जहां हम इस वक्त हैं। उन्होंने इस्लाहात नाफिज की, लेकिन उन्होंने मश्क के लिए जो तैयारियां की वो काफ़ी मुतासिर कुन थी। उन्होंने मईशत को खोलने से पहले बहुत सारे शोबा जाती काम किए थे और जब ऐसा हुआ तो मईशत काफ़ी तेज़ी से जवाब देने के काबिल थी। वहाँ हमारे लिए मुफीद सबक हो सकते हैं। पाकिस्तान के लिए अगले चंद साल आसान नहीं होंगे। ज़्यादातर इम्कान है कि हम मतलूबा इस्लाहात नहीं करेंगे और हैंड आउट पर लंगर अंदाज होते रहेंगे। लेकिन अगर हम इस्लाहात को नाफिज करना चाहते हैं तो हमें जिस मसले का सामना करना पड़ेगा वो ये है कि हमारे पास मतलूबा पस मंज़र पर काम नहीं है और हमारे पास इस्लाहात को नाफिज करने के लिए ज़रूरी अहलियत की सतह नहीं है। लिहाजा अगर हम मतलूबा रास्ते पर जाने का इंतखाब करते हैं तो भी हम ऐसा करने के काबिल नहीं हो सकते। पाकिस्तान के अवाम के लिए आजमाइश का वक्त जारी रहेगा। मज़मून निगार इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक अल्टरनेटिव्स में सीनियर रिसर्च फेलो और लम्स में इकोनॉमिक्स के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। अखज़ शदा बतारीख 3 फरवरी 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.